Aditi, अगर देखा जाए real estate is a vast market where you have a builder, channel sales, finance. So how do you think channel partner, does it play an important role in the market? And if it plays, so how women can utilize this opportunity and make a good career out of this? I have seen the market over the past couple of years. It has changed drastically after COVID and all. And I've seen CP's vertical has become very strong. Very, very strong. Not only in Bangalore. You see anywhere. पहले क्या था ब्रोकर बोले एक नेगेटिव इंप्रेशन आ जाता था, राइट? बट आप इंडिया के बाहर दुबई में देखो, दे आर द वन, दे ड्रेस अप सो वेल. They have all the luxury cars. You know, they have next standard and they're so confident and so proud. Wherein in India, ये थोड़ा एक negative impression. People don't like to call them, you know, but when you see long term perspective में, जैसे आपके financial advisors होते हैं, right? People will help you to invest your money in portfolios, equity and all, right? They'll guide you. जैसे डॉक्टर आपका इलाज करा because he knows. वैसे ही somebody is there who will invest your real estate money. He will suggest you where to buy, where to invest, when to sell, when not to sell, right? That person has a lot of professional advice. Then I see channel partners doing so well because they are very well educated, they are very way updated, and every builder has a dependency on them. So it's like builder needs CP, CPs need builder. अब builder के साथ क्या होता है? I would only suggest my project, but a channel partner will be a non-biased, है ना? और I have seen people, they have so depth knowledge, they know, है ना, क्या पिच करना. एंड लॉट ऑफ NRIs and HNIs money, they are handling it so well, right? उनका क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में रहेगा. ऑब्वियसली वो बहुत जरूरी है, वो आता है ट्रस्ट से. तो अब ये सब चीज़ धीरे धीरे बदलना चाहिए. एंड आई थिंक इट हैज़ बिन डूइंग इट ऑल्सो. ऐसा नहीं है, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. अब जो ये चैनल पार्टनर वर्टिकल हैज़ बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. इट इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग एंड आई सी वेरी गुड पीपल ज्वाइनिंग देयर. वहाँ पे आपका करियर ग्रोथ भी है. You have immense exposure, you have a lot learning and there is good money. There is no doubt there is good money. इतने इनवॉइसेस मेरे पास आते हैं तो मैं देख रही हूँ वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, है ना. और अभी मार्केट बहुत बदला है. जो सीपीज, जो बिल्डर्स पहले सीपी को एंटरटेन नहीं करते थे, नाउ दे आर डूइंग. नाउ एवरीबडी, यू सी देयर इज अ सोर्सिंग टीम ओनली. और एक डेवलपर भी अगर स्पेंड कर रहा है तो वो ब्रांडिंग करेगा. बट आप सोचो कि एक बिल्डर के लिए 200 लोग कैंपेन कर रहे हैं तो उसका वर्ड ऑफ माउथ ब्रांडिंग भी कितने बड़े लेवल पे होगा, राइट? एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस. So like women, they can utilize this opportunity if they have right Why not? skills. Yes, of course. Why not? Like there are many CPs wherein women are leading the company. Yes. And I think अभी this gone are those days कि you cannot join real builder और CP. नहीं, आप कहीं भी ज्वाइन करो, ग्रोथ है. It also depends personally. Where do you think you can add value more? Where you can perform well? And I've seen a lot of CPs I handle. I see a lot of females और धीरे धीरे वो बढ़े and they're doing really good. You know, and I think it's everywhere. It has changed a lot. अभी काफ़ी females आपको दिखेंगी and I'm sure coming days में वो और increase होगा. Quality performance और बढ़ेंगे.